বাইরে উত্তাপ যতটাই বাড়ছে ততটাই উত্তাপ বাড়ছে নবান্ন এবং রাজভবনের মধ্যে। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্তে জুডিশিয়াল এনকোয়ারির নির্দেশ দিয়েছেন, যা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা চলছে, কিছুটা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গিয়েছি খোদ দ্য ম্যান অফ আইডিয়াজ डॉक्टर सीवी आनंद बोस। सर वेलकम टू एनकेटीवी। सर आपने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिए है यूनिवर्सिटीज में इरेगुलरिटीज जो है, yes. ये क्यों, ये आप बता सकते हो? As governor and chancellor, I received a lot of complaints about the universities. Complaints on corruption, complaints on violence, recently complaints on violation of the election code of conduct in using the university premises for electioneering. The only way to arrive at the truth, I thought, is a judicial inquiry. Therefore, in my capacity as governor and chancellor, I have ordered a judicial inquiry into these allegations. Sir, your constitutional colleague Mr. Bratto Bosu, he questions about your power. आपका क्या ये पावर है ये ऑर्डर देने में? वो क्वेश्चन उठाया है। Anyone can question any authority under democracy. We should see what are the legal and constitutional provisions that will decide whether the action is right or wrong. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ वाइस चांसलर्स एंड हम लोग देखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उन लोगों को पुनर्नियोग दिया है वाइस चांसलर्स। क्या ये सही है? ये टू द पावर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है इसमें? Government has no right, I repeat, no right to appoint, reappoint or remove vice chancellors. Sir, you instruct state government to take action against education minister ब्रात्तो बसु। आपने बोला है कि एमसीसी वायलेट हुआ है, इसीलिए मिस्टर ब्रात्तो बसु को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। क्या ये सही है और क्यों है? That is not correct. What happened is, in the Raj Bhavan, particularly the Loksabha portal, we received a lot of complaints from professors, from vice chancellors, from parents, from students, from lawyers, from intellectuals, from a cross-section of the civil society against the activities of the present minister in charge of higher education. There was specific demand to remove him from ministership. Those were the demands which arose from those who sent the petitions and representations to the governor. These were sent to the competent authorities for appropriate action. That is the fact. Okay. Sir, you visited many places in West Bengal. You visited Canning, Sandeshkhali, recently you visited North Bengal, Jalpaiguri. लेकिन सर जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के नेता और नेत्री ये क्लेम करते हैं कि आप फोटो सेशन करने के लिए जाते हो। I did not enter into political conflict with anyone. I have seen violence in various parts or pockets of West Bengal, which is a reality. I go to the ground zero to understand the ground situation and also to know the facts from the experience of the people who are the sufferers. I will continue my work. That has given me the impression that in many pockets there is what can be called Jungle Raj or Gunda Raj, including Sandeshkhali, which I visited. सर आफ्टर पंचायत इलेक्शन आप देखे हैं कि बहुत हिंसा हुआ है और ये लोकसभा वोट का एमसीसी लागू हो गया। 19 अप्रैल से वोट चालू होगा वेस्ट बंगाल में और सारा देश में। आप गवर्नर है इस स्टेट का, तो क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या मेजरमेंट लेंगे, ये अगर बोले तो?
I am trying my level best. I am committed to the people of Bengal to try my level best to stem the rout of violence during election. I am visiting the field. I am interacting with the officials, the election officials. I am also conveying sensitive information about the lawbreakers to the competent authorities. I am watching what action is being taken by the competent authorities. I will be in the field as a governor and as a citizen of this nation. हम लोग देखे हैं कि अब इस गवर्नर हाउस में पीस रूम खुले थे, पीस रूम जो पीड़ित है उन लोगों को रहने के लिए. अगर ऐसा ना हो, ये चाहते हैं हम लोग, अगर हो जाए ये लोकसभा इलेक्शन में बहुत हिंसा हो, बहुत सारे विक्टिम्स हो, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ रूम्स खोल देंगे या कुछ प्लानिंग? Already, in the context of Sandesh Gali victims, we have already started peace home here. Anyone who feels threatened can come here. Rajbhavan will take care of them. We will provide them food, shelter and security. That will continue during this election as well. सर, पहले वाला क्वेश्चन में हम जाते हैं. जो मिस्टर ब्रात्तो बसु आपका कॉलीग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलीग, उसको उसके साथ आपका अनबन क्यों नहीं है? इसका आपका रिलेशन इतना अच्छा क्यों नहीं है? I have excellent relations with everybody. But on official matters, I will not budge. I refuse to be pressurized. I will not support any wrong deed if I am convinced it's a wrong deed. That is what is happening here. Government has nothing to do with university autonomy. Government has to keep off universities. This is not my pronouncement. This is the order of the Supreme Court of India. The Chancellor is head of the universities. The Chancellor alone can appoint, reappoint or remove Vice Chancellors. The very fact that government is providing funds to the university does not mean he who pays the piper will call the tunes. This has been very clearly stated by the apex court of this country. That is what I am trying to do. If anybody cannot accept it, then there may be conflict. Otherwise, there is no personal conflict. For me, there is no personal conflict with anybody, even with those who attack me barely. सर, आपने 23 पेजेस रिपोर्ट कार्ड आप पेश किए थे. वो जो हम लोग देखे हैं, वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का सब वर्डिक्ट आप दिए थे. ये बोले थे कि यूजीसी गाइडलाइन में जैसा है ऐसा ही काम आप करते हैं. बट ऐसे हम लोग देखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने फिर आपको चिट्ठी दिया 9 पेजेस. वहां पर आपको बोला कि आप जो काम कर रहे हो ठीक नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. I am not an expert in constitution. I am not an expert in anything. With that humility, I try to study the constitution and also read the Supreme Court judgments over and over again. From those, what I could gather is what has been given in my report card to the people. They are nothing but the truth which is contained in the Supreme Court judgments and the Constitution of India. These are not my making. If anybody can point out any lapse in that, it means they are questioning the orders of the Supreme Court. That is to be tackled with in a different manner, not with me. सर, 30 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ था गौड़बंग यूनिवर्सिटी में, आपको पास आपका रिपोर्ट आया और ऐसे बोला गया है कि वहां पर एमसीसी वायलेट हुआ है. लेकिन ऐसे बोला जाता है, मिस्टर ब्रात्तो बसु और टीएमसी लीडर्स ने बोले हैं कि ये बात कहना चाहिए बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआईएम को. क्यों राजभवन से ये विबृति आ रहा है? राजभवन से स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? जो अगर एमसीसी वायलेशन हो तो ऑपोजिशंस लोग बोलेंगे क्यों, व्हाई राजभवन? Rajbhavan is neutral. Rajbhavan does not differentiate between political parties. Any wrong deed done by any political party, if it comes to the notice of the Rajbhavan, appropriate action will be taken. Okay, और ये जो आप शायद देखे होंगे, मिस्टर ब्रात्तो बसु ने एक सैंडल में बोले हैं, आपको चैलेंज किए हैं. अगर आप नहीं देखे हैं तो हम बोल देते हैं आपको, जो आपका ये पावर है ही नहीं जो जुडिशियल इंक्वायरी आपने ऑर्डर दिए हैं. तो इसके बारे में और एक बार आप कमेंट कीजिए. I welcome
such criticism. If anybody can prove that the governor doesn't have the power, governor or chancellor doesn't have the power, certainly I will accept it. But before taking any decision, I try to do due diligence. I have consulted the lawyers. I have myself read the law text, and I have come to the conclusion there are also precedents in other states where judicial inquiry has been ordered. I stand corrected if I am wrong. Who will chair this commission, sir? A competent judge, preferably a former Chief Justice or a Justice of a High Court, will be chairing it. और लास्ट में आप बोलिए कि ये जो हो रहा है, जो इंसिडेंट्स यहाँ इसको लेकर क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल या किसी के साथ आपका कुछ बात हुआ? There is a healthy communication system between me as governor and my esteemed constitutional colleague, the Chief Minister. We share our thoughts. We agree, we disagree. We agree to disagree. What transpires between us will be kept confidential. Our communication system is there. We are in touch with each other. सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप एक एक्स आईएएस ऑफिसर, आप बहुत सारे किताब लिखे हैं, आप गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, आप एक रिस्पेक्टेड चेयर में है, फिर भी आपको सुनना पड़ता है कि आप बीजेपी का दलाल हो। कैसा लगता है और आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं भारतीय जनता के दलाल हूं, कोई पार्टी का नहीं, भारतीय जनता का, पीपल ऑफ इंडिया। मेनी मेनी थैंक्स। ক্যামেরায় দীপঙ্করের সঙ্গে দীপঙ্কর মণ্ডল, NKTV বাংলা।